Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in English class, we are going to learn long U sound words sentence, okay? Sentence made by long U sound words, okay? So now let's see what does it says, okay? So now let's start. First I will read, okay? First I will read each and every word with spelling. Then I will explain you, okay students? CUTE cute, MULE mule, DUKE duke, has, a MULE mule, full stop, MULE mule, is, so, CUTE cute, full stop. DUKE duke, PLAYS plays, a FLUTE flute, full stop. HE KEEPS keeps, IT it, IN in, a BAG bag, OF off, JUTE Jude, full stop. IN in, THE the, MONTH month, OF off, JUNE June, comma, DUKE duke, MADE maid, a RULE rule, comma, TO2 SING sing, a SONG song, comma, ONLY only, IN in, TUNE tune, full stop. MULE mule, BECAME became, MUTE mute, exclamation mark, NO no, exclamation mark, PRACTICE practice, TO2 SING sing, IN in, TUNE tune, full stop. DUKE duke, AND and, MULE mule, ARER, HAPPY happy, exclamation mark. So students, we have finished reading it. Now I will explain you what does the sentence say, okay? Duke has a mule. मतलब Duke means a person of high nobility. मतलब compared to a king, okay? Just like a king, जिसको टाइटल दिया गया है ड्यूक, ओके? हैज़ अ म्यूल मतलब ड्यूक के पास एक क्या था, एक गधा था, ठीक है? म्यूल मीन्स अ मेल डोंकी, ओके? म्यूल इज़ सो क्यूट, और ये डोंकी क्या था, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सुंदर था. ड्यूक प्लेज अ फ्लूट, और ड्यूक क्या करता था, बांसुरी बजाता था. फ्लूट मीन्स बांसुरी. ही किप्स इट इन अ बैग ऑफ जूट, और ये फ्लूट वो कहाँ पे रखता था, अपना जूट का बैग में, ठीक है? जूट से बना हुआ बैग में रखता था. इन द मंथ ऑफ जून, और जून का महीना में, ड्यूक मेड अ रूल, ड्यूक ने क्या किया, एक रूल बनाया. कौन सा मंथ में, जून के मंथ में, ठीक है? टू सिंग अ सॉन्ग ओनली इन ट्यून, कि जो भी गाना गाएंगे हमेशा क्या चीज़ में, सिर्फ लय में गाएंगे, सुर ताल में. ट्यून मीन्स लय, ओके? लय में ही गाएंगे. म्यूल बिकेम म्यूट, और जब ये रूल सुना तो ये डोंकी क्या हो गया, एकदम चुप हो गया. नो प्रैक्टिस टू सिंग इन ट्यून, ड्यूक एंड म्यूल आर हैप्पी. अब क्या हुआ, ड्यूक ने बोला, रूल बनाया है ना कि जब भी गाना गाएंगे तो ट्यून में ही गाना गाएंगे. तो दोनों क्या करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है? अब ड्यूक भी हैप्पी है और म्यूल भी क्या है, हैप्पी है. नाउ लेट्स सी द साइड वर्ड्स. द साइड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस आर IS is, SO so, ONLY only, ARER. ओके, ये थे साइड वर्ड्स इस सेंटेंस में. नाउ न्यू वर्ड्स आर BAG बैग, MONTH month,
S-O-N-G, song. P-R-A-C-T-I-C-E, practice. H-A-P-P-Y, happy. Okay? And phonic words are D-U-K-E, duke, M-U-L-E, mule, F-L-U-T-E, flute, C-U-T-E, cute, J-U-T-E, jute, J-U-N-E, June. So these were the phonic words from this chapter. So students, I hope you all understood. Once again, you read this and try to pronounce it correctly. Okay? Keep practicing. Thank you and have a nice day.